Guys, welcome to the second part. We have Bahroz with us, and we'll move to the second set of questions. And This one is a bit separate from the technical side of things. I would request Bahroz कि आप मुझे बताएं कि if a professional wants to move from Pakistan to Canada or to US, more specifically Canada, because I understand US is a different immigration law overall, and Canada is a place which you can recommend more because you've been through that process. What can people do right now if they want to move? If they have, whether they're young professionals or senior professionals, um, क्या वो तरीके हैं, क्या वो प्रोसेस हैं, वेयर डू दे हैव टू गो? Just think कि किसी को कुछ पता ही नहीं है, I'm starting from the scratch. What would you recommend is the process, and what are with the maximum chances of getting a success for getting PR or directly a job as well? Yeah, beautiful question. इसके बहुत से parts हैं, but let me try to take it one by one. I think इसमें पहला part ये कि why Canada? अच्छा, Canada इसलिए क्योंकि Canada has ease of immigration. Canada की population growth is kind of declining, and they want more immigrants for them to maintain their population growth. Achha, by the way, I have a separate YouTube channel as well, along with my wife, जिसमें we talk about both of us about settling in Canada, immigration in Canada, and also ये जो भी मैं बातें कर रहा हूँ तो बहुत will be top line. There is detail that you can check out on people can check out on that channel as well. But दो मुल्क ऐसे आते हैं अमूमन दुनिया में जो काउंट होते हैं जहाँ ease of immigration है because they have a good immigration system, like there is good process. US is for that matter very broken system. इनका जो इमिग्रेशन सिस्टम है यूएस का, दैट इज फ्रॉम द टाइम ऑफ वर्ल्ड वॉर. तो अभी भी वो उसी सेटअप में बना हुआ है कि वो उस वक्त जर्मनी से लोग आ रहे थे तो उनको सिमुलेट करने के लिए उसके बाद से रिन्यू हुआ ही नहीं. और कनाडा ऑस्ट्रेलिया के इमिग्रेशन लॉज और सिस्टम बहुत न्यू है, तो इट्स इजी टू बी पार्ट ऑफ इट एंड गो टू ऑस्ट्रेलिया और कनाडा. अच्छा, उसमें व्हाई how to choose between Australia and Canada? That's a question which I'm asked, or maybe I made a detailed video, and I think it would be important to address this as well. मैं अमूमन लोगों को ये कहता हूँ कि there are two things to look for. One is social network, and the other is economic. So social piece and economic piece. क्योंकि आप किसी भी मुल्क में जाएंगे वहाँ आपका social network होना बहुत लाजमी है और आपकी economics होना भी लाजमी है. You should be able to earn money as well. If you have these two things, your life will be set. तो एक तो आप ये देखें कि आपके relatives, friends ज़्यादा कहाँ हैं, ताकि जब आप वहाँ लैंड करें तो आप बिल्कुल अकेला फील ना करें. You are able to assimilate, you are invited at people's place, people invite you and so on and so forth. तो जहाँ आपके relatives ज़्यादा हैं, मेरे लिए जो है मेरे relatives, मेरे अपने direct relatives नहीं थे, but मेरे wife की बहुत सी family in Canada थी, so it was very easy for us to come here and be just part of a community. दूसरी चीज़ economics, which is आपको job कहाँ अच्छी मिलेगी. अच्छा, उसमें एक element तो ये है कि instant job आपको कहाँ अच्छी मिलेगी, कि कहाँ industry अच्छी है. So for instance, Canada में industries, oil and gas, banking, telecom, these are the big industries. So अगर आप किसी इस sector से belong करते हैं, you have a good chance of hitting a job earlier than average. Australia की थोड़ी सी different industry होगी, but I know about Canada more. So you have to study कि direct instant job मिलने के लिए कौन सा country बेहतर है, depending on what profession you are from. But एक जो बहुत important element है जो लोग miss करते हैं वो ये है कि Australia is very separate from the world geographically, while Canada is in touch, hip to hip, with the world's biggest economy, which is US. So at any given point in time in future, you can tap into that opportunity. जहाँ tax rate कम है, income level ज़्यादा है, opportunities massive हैं, economy is very big. So you will get all that advantage while being in Canada, which you won't have in Australia. So I tell people कि अगर आपने long term ये देखना है कि यार मेरा long term career कहाँ बनेगा, long term opportunity कहाँ exist करती है, I say that's more in Canada just because it's close to US and you can always tap into US economy. So I just wanted to lay that piece out. I do have a bias for Canada because I am a Canadian national now, but that's the reason how I chose Canada over Australia. Now, अब इसमें सवाल आ जाता है कि अच्छा जो यंग प्रोफेशनल्स हैं वो कनाडा आए किस तरह, जिस तरह मैंने कहा कि इनका सिस्टम इट्स वेरी स्ट्रक्चर्ड. अच्छा, हम एक बात और कहता चलूँ,
लोग क्या करते हैं, लोग कहते हैं यार कंसल्टेंट पकड़ लें, और देयर आर लॉट ऑफ कंसल्टेंट्स एंड इमिग्रेशन लॉयर्स एंड ऑल. आई थिंक देयर बिजनेस इज बूमिंग these days. I highly recommend not to go to them. I find them very expensive. I'm a very frugal guy. I'm very good. I try to be very good with money. I'm very frugal. I know where to spend, where not to spend, and all. And this is one of the worst spending that you can do. The reason being, कंसल्टेंट का, और सिर्फ कंसल्टेंट आप दो सूरतों में यूज करें. अगर आपको अंग्रेजी में या फ्रेंच में फॉर्म भरना नहीं आता, जो कि मेरे ख्याल से बहुत रेयर होगा, अगर कोई बंदा प्रोफेशनल है कि वो अंग्रेजी में फॉर्म ना भर सके. फ्रेंच में तो एज्यूम नहीं आता होगा, मुझे भी नहीं आता, बट अंग्रेजी में फॉर्म. दूसरा, अगर आपके पास टाइम नहीं है, और टाइम ना होने से मुराद ये कि आपके पास वीकेंड पे भी टाइम नहीं है, क्योंकि ये पूरा प्रोसेस जो है समझना, एक वीकेंड है, लाइक सैटरडे संडे, इफ यू स्पेंड होल सैटरडे संडे, यू विल अंडरस्टैंड द प्रोसेस, एंड मे बी अनदर वीकेंड टू सबमिट द थिंग्स दैट यू वांट टू डू. जो कंसल्टेंट है, एजेंट है, वो दे ऐड जीरो वैल्यू. ऑल दे डू इज फिल इन योर फॉर्म. आपको कुछ चीजें चाहिए होती हैं, आइल्स, वो बोलेंगे आप प्लीज गिव मी योर आइल्स, सो यू हैव टू डू द आइल्स योरसेल्फ. Please bring the police report. You'll have to bring the police report yourself. Please attest your documentation with HEC. You'll have to. तो मैं जब इनके पास जाता था और वो दिन मैं कहता सब काम तो मैंने करना है, तो आपने क्या करना है? जी हम फॉर्म भर के देंगे. मैंने कहा नो, आई कैन डू दैट माई सेल्फ. अच्छा, उसमें फिर एक चीज लोग और आती है, यार अगर मुझसे मिस्टेक हो जाए तो फिर क्या होगा, मेरी तो एक ही चांस है, जो कि चांस चला जाएगा. लोगों को लगता है कि ये एग्जाम है, अगर मैं कोई मिस्टेक कर दूंगा ना तो देखेंगे ओहो यार इसने तो ये मिस्टेक कर लिया, अब इसको हम कनाडा नहीं बुलाएंगे क्योंकि इसको फॉर्म भरना नहीं आता. ऐसा कुछ नहीं है. So I made a mistake on the form. When I was filling my wife career, as I said, she took a break in when we were in Middle East. तो मैंने वो blank छोड़ दिया, मैंने कुछ नहीं लिखा उसमें. They sent me a letter back saying कि यार आपने फॉर्म सही से नहीं भरा, तो आपको फील्ड भरनी थी, आपने इसको blank ही छोड़ दिया. मैंने कहा सॉरी, तो मैंने उनको रिप्लाई कर दिया कि ये इसका आंसर है. They filled it themselves, and my process got delayed by a month just because I made that mistake. But that's that. कोई ऐसा एग्जाम नहीं है कि यार उन्होंने अब मुझे मार्क्स कम दिए क्योंकि मैंने मिस्टेक कर दी. सो ऐसा भी कुछ नहीं होगा. यू रादर सेव द मनी. बेशक अगर आपका प्रोसेस एक महीने से डिले हो जाता है, बिकॉज यू एंड अप मेकिंग अ मिस्टेक व्हिच अदर्स वोंट. तो आई जस्ट वांटेड टू पुट दैट आउट एज वेल. अच्छा, अब चूंकि सिस्टम बहुत स्ट्रक्चर्ड है, सो एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन देयर वेबसाइट. IRCC की वेबसाइट है, उसमें अपना लॉगिन बनाया और उसमें सब डिटेल दी. जो स्टेप्स हैं, अगर इफ आई कैन जस्ट कॉल आउट सम ऑफ द स्टेप्स. वन इज फर्स्ट ऑफ ऑल सी योर एलिजिबिलिटी बिफोर यू स्पेंड एनी डाइम. आप IRCC की वेबसाइट पे जाएं, उसमें क्योंकि स्कोरिंग बेस्ड सिस्टम है, तो होता ये कि बेस्ड ऑन योर डिग्री, बेस्ड ऑन योर IELTS स्कोर, बेस्ड ऑन योर एज, प्रोफेशन, इस सब पे आप एक स्कोर क्रिएट करते हैं. अच्छा, प्रोफेशन से मुराद ये कि कैनेडा इज लुकिंग फॉर सर्टेन प्रोफेशंस टू इमिग्रेट टू कैनेडा, क्योंकि वो देखते हैं कि यार हमारे पास डॉक्टर कम है तो हमको और डॉक्टर्स चाहिए, हमारे पास फाइनेंस प्रोफेशंस कम है, हमको और फाइनेंस प्रोफेशंस चाहिए. सो दे वांट टू कीप अ बैलेंस. तो वो एक ऑक्यूपेशन खोल देते हैं कि यार हमको फाइनेंस के लोग चाहिए, फाइनेंस ऑक्यूपेशन के लोग चाहिए. तो अगर वो ऑक्यूपेशन खुला हुआ है, सो व्हाट यू कैन सिंपली डू इज यू कैन अप्लाई ऑन दैट ऑक्यूपेशन, और आप अपनी एलिजिबिलिटी जाके एक स्कोर चेक करते हैं बिफोर यू स्पेंड अ डाइम, सेइंग कि यार अच्छा बेस्ड ऑन माय एज, माय IELTS स्कोर, माय ऑक्यूपेशन, माय नंबर ऑफ इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, देयर आर डिफरेंट क्राइटेरियाज दैट दे आर लुकिंग फॉर, बिकॉज उनको एक ऐसा बंदा चाहिए जो वहां आके इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करे, टैक्स पे कर सके, सो यंग हो, प्रोफेशनल हो, वो उसी फील्ड से हो जिस फील्ड से वो चाहते हैं, अंग्रेजी बोलनी आती हो. अगर कोई उनका फैमिली मेंबर कनाडा में एग्जिस्ट करता है तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि वो आके यहाँ एसिमिलेट हो जाएंगे और यहाँ अलोन फील नहीं करेंगे. सो ये सारी चीजें आपके पॉइंट्स बढ़ाती हैं. तो अगर आपका फैमिली मेंबर है, आपको ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे. सो सी व्हाट योर पॉइंट्स आर. लेट्स से आप जब अपने पॉइंट सारे ऑनलाइन जाके डालते हैं सारी चीजें, आपका पॉइंट्स बन जाते हैं लेट्स से 410. फिर आप जाके देखें कि यार पिछले टाइम में कट ऑफ होता है कि हर 2 हफ्ते बाद दे पिक सम इमिग्रेंट्स. वो अपना सिस्टम खोलते हैं और देखते हैं कि यार हमको 100 इमिग्रेंट्स चाहिए इस हफ्ते. तो जो टॉप 100 इमिग्रेंट्स हैं वो उठा लेंगे जिनके टॉप स्कोर्स आ रहे हैं, और फिर कट ऑफ कर देंगे कि यार इससे नीचे के लोग हमको नहीं चाहिए, इससे ऊपर के लोग चाहिए. सो लेट्स से उन्होंने कट ऑफ लास्ट जो क्रिएट किया है, या लास्ट 5 से 10 कट ऑफ जो क्रिएट हुए हैं, वो हुए हैं 480 पे, और आपका स्कोर है 410 पे, और पिछले एक साल में 410 तक कभी बात आई नहीं. इसका मतलब it is very difficult for you to go through skilled worker program, and you'll have to try something else, and there are other ways as well, and I can talk about them. तो पहला तरीका ये कि आप ये देखें कि यार आप पहुंच भी सकते हैं उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे नहीं, क्योंकि होता अमूमन बहुत सा ये कि लोगों को पता नहीं होता, लोग जाते हैं कंसल्टेंट को पैसे देते हैं, और कंसल्टेंट स्कोर कम होता है, कंसल्टेंट पैसे ले लेता है और फिर कहता है बस वो आपका आ नहीं रहा, आप कट ऑफ में नहीं आ रहा, और फिर लोगों की एज होती रहती है, एंड एज यू एज आपका स्कोर और कम होता रहता है. सो do it yourself and understand whether you are eligible to move to Canada or not. Again, as I said, the process is very simple.
अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें आपको चाहिए होंगी फेडरल स्किल वर्कर या प्रोग्राम के अंदर, जिसमें आपको आइल्स अपना देना है, आइल्स का स्कोर अच्छे से अच्छा होना चाहिए। यू हैव टू गेट अ पुलिस रिपोर्ट बिकॉज़ दे वांट टू मेक श्योर कि आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं हो। अपनी डिग्री आपको अटेस्ट करानी पड़ती है पहले एचईसी से, और एचईसी का सीड एनवेलप यू हैव टू सेंड इट टू एन ऑर्गेनाइजेशन इन कनाडा जो कि अटेस्ट करती है कि वेदर दिस डिग्री इज इक्विवेलेंट टू अ बैचलर्स इन कनाडा और इक्विवेलेंट टू अ मास्टर्स। मास्टर्स होगी तो ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। तो अच्छा ये होता है, अमूमन लोग करते हैं ये कि वो जब अपना स्कोर रफ असेस कर लेते हैं तो उसके बाद वो आइल्स और अपनी डिग्री असेस करा लेते हैं, जस्ट टू कंफर्म कि बिफोर दे अप्लाई दे शुड नो कि उनका आइल्स का स्कोर क्या है, ताकि उसके बेसिस पे उनका इमिग्रेशन का स्कोर बन सके, और उनकी डिग्री की अटेस्टेशन क्या है, इज इट मास्टर्स और बैचलर्स, उसके बेसिस पे वो स्कोर बन सके। एंड देन दे गो एंड अप्लाई एंड दे फिल इन द फॉर्म ऑनलाइन। अच्छा, ऑनलाइन जब आपने फॉर्म फिल कर दिया, लेट्स से आपका स्कोर बनता है 490, और अगली कट ऑफ में आपका 490 स्कोर पिकअप हो गया, फिर वो आपको भेज देते हैं एक इंटरेस्ट टू अप्लाई, विच इज आप बेस्ड ऑन व्हाट यू हैव टोल्ड अस यू आर एलिजिबल टू कम टू कनाडा एंड वी वांट यू टू कम टू कनाडा, बट वी जस्ट वांट टू वेरीफाई कि आपने जो कुछ कहा है वो सच है। तो फिर वो आपसे सारे डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, आपके प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स, लाइक फॉर इंस्टेंस आपको अपने ऑफिस से एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनाना होगा कि आपने फाइनेंस में काम किया हुआ है, जो भी आपका प्रोफेशन है। आइल्स का स्कोर सबमिट करना होगा, अपनी पुलिस रिपोर्ट सबमिट करनी होगी, मेडिकल रिपोर्ट देनी होगी, एंड सो ऑन सो फॉर। सो यू सबमिट द फिजिकल डॉक्यूमेंट्स टू देम एंड सेंड इट टू देम, ताकि दे मेक श्योर कि हाँ आपने जो भी लिखा है, फॉर्म जो भरा था इनिशियली, वो ट्रू है या नहीं। एंड इफ दैट इज वैलिड, उसमें शायद 6 महीने लग जाते हैं उनको असेस करने में, देन दे विल सेंड यू अ रिक्वेस्ट टू सबमिट योर पासपोर्ट। आप अपना पासपोर्ट सबमिट करते हैं एंड दे विल गिव यू अ वीजा टू ट्रैवल, एंड विद इन उसके एक टाइम फ्रेम होता है, 12 महीने से कम होता है, उसके अंदर अंदर आपको ट्रैवल एंड मूव करना होता है टू कनाडा, एंड देन यू कैन सिंपली मूव। सो ये दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्रोग्राम्स व्हिच इज कॉल्ड फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम, जिसमें आप अपनी क्वालिफिकेशन के बेसिस पे और अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे अप्लाई करते हैं, क्योंकि उनको एक स्किल्ड वर्कर चाहिए। अच्छा, इसमें अगर आपके पास जॉब ऑफर हो तो पॉइंट्स और बढ़ जाते हैं। अच्छा, इसमें भी थोड़ा सा स्कैम होता है। मुझसे आई वाज हैविंग अ कॉल बिकॉज़ आई आल्सो कोच पीपल ऑन immigration. So there are random people who reach out to me, and then I have sessions with them to coach them how to come to Canada and all. तो उसमें किसी ने कहा था कि हमको कंसल्टेंट कह रहा है यार आपको जॉब ऑफर दिलवा देंगे। तो होता ये कि यहाँ कुछ फ्रॉड शेल कंपनीज हैं। सो फॉर इंस्टेंस मैंने एक कंपनी खोल ली और मैंने कंपनी में दिखा दिया कि मेरा एक बिजनेस चल रहा है और मैं कुछ ट्रांजेक्शंस दिखा रहा हूँ, और मैं आई हैव कैपेसिटी टू हायर 10 पीपल एंड आई विल सेंड उमर अ जॉब ऑफर। मैं कहूँगा कि उमर को मैं एज एच आर प्रोफेशनल हायर कर देता हूँ अपनी कंपनी में, जो कि एक्चुअली पेपर पे एग्जिस्ट करती है बट है नहीं। अच्छा, जॉब ऑफर की वजह से आपका स्कोर 410 था बट एकदम से 490 हो गया, बिकॉज नाउ यू हैव अ जॉब ऑफर एंड यू गेट एन इमिग्रेशन। वेरी गुड। एंड द कंसल्टेंट विल टेक मोर मनी फ्रॉम यू। दैट कंपनी दैट आई हैव ओपन, जो फ्रॉड कंपनी है, वो भी आपसे पैसे ले लेगी। आप कनाडा आ जाएंगे और आप कनाडा बच जाएंगे और आपको शायद नेशनैलिटी भी मिल जाए। आज से 10 साल बाद मेरा फ्रॉड पकड़ा जाता है, लेट्स से, और वो किताबें खोलते हैं और बोलते हैं यार ये तो उसने को 500 लोगों को 2 नंबर तरीके से बुलाया था और उसमें तो उमर भी शामिल है। So they will call Umar and they will take the passport from Umar and say your nationality is cancelled, because they say Canadian nationality is not a right, it's a privilege unless you are born here. तो आपका बच्चा अगर यहाँ पैदा होगा उसको कुछ नहीं होगा, बट मेरा पासपोर्ट आज भी जब कनाडा गवर्नमेंट चाहे वो ले सकती है। अगेन मतलब इट्स नॉट लाइक दे जस्ट टेक इट बिकॉज दे फील लाइक, दे हैव टू गो थ्रू ड्यू प्रोसेस एंड एवरीथिंग, बट इफ दे कैन प्रूव that I did a fraud in how I got my passport. By the way, there were examples. अब थोड़ी सी बात लंबी हो रही है। जब लेबनान वॉर हुई थी, so half of Lebanon stood up and said कि we are Canadians, हमको बचाओ, because Canada is supposed to take care of the citizens. And Canada was like, ये आधा लेबनान कैनेडियन कैसे बन गया, जबकि ये कनाडा में कभी आया नहीं। और वो बना इसी तरह था क्योंकि वो उन लोगों ने अपनी अप्लाई कर ली, and then they would have someone who would be using credit cards in Canada, they would buy a house here and pretend they have a life in Canada but never move to Canada, either be in Middle East or be in Lebanon, and they never moved and they still got the nationality. So Canada ने उन बहुत सौ को आइडेंटिफाई करके उनकी नेशनलिटी कैंसिल की। So I recommend don't take this risk, especially आप अपनी नौकरी छोड़ कर आए, आप अपना मुल्क चेंज करें। And imagine you come to a new country assuming कि this is now your new world, this is now your new identity, and suddenly you lose it just because आपने 10 साल पहले एक फ्रॉड किया था। So yeah, that's another thing I just wanted to call out. अच्छा, इसके अलावा भी कुछ प्रोग्राम्स हैं, which is एक है एक्सपीरियंस प्रोग्राम कहलाता है, which is अगर आप एज ए स्टूडेंट आए हों और आप जब यहाँ एज ए स्टूडेंट आते हैं, which is another way people come, अगर उनको नहीं कट ऑफ में नाम आ रहा है या उनका स्कोर नहीं बन रहा, so they apply for education, they come here as a student,
जब आप स्टूडेंट के आपके साल 2 साल खत्म हो जाते हैं, देन यू गो फॉर अ जॉब, फिर आप जब साल 2 साल जॉब कर लेते हैं, तो वो आप एक्सपीरियंस क्लास में आ जाते हैं। सो फिर कनाडा कहता है कि यार अच्छा, एक बंदा जो यहाँ पहले से आ गया है, अंग्रेज़ी भी बोलनी आती है, उसने कनाडा से पढ़ भी लिया है, यहाँ जॉब भी कर रहा है, तो उसको प्रेफ़र करें या उमर जो पाकिस्तान में बैठा है उसको प्रेफ़र करें? सो यू गेट मोर प्रेफ़रेंस, यू गेट मोर स्कोर। चैलेंज उसका ये है कि यू हैव टू पे द मनी फॉर द एजुकेशन हियर व्हिच इज़ एक्सपेंसिव फॉर एन इंटरनेशनल स्टूडेंट। तो और उसके अलावा देयर आर अदर प्रोविंशियल प्रोग्राम्स एज़ वेल। आई वोंट गो इंटो डिटेल्स ऑफ दैट। अगर पीपल आर इंटरेस्टेड दे कैन चेक आउट दैट चैनल व्हिच आई रेफर्ड। बट वो हर प्रोविंस का एक प्रोग्राम है, बिकॉज़ देयर आर सर्टेन रिमोट प्रोविंसेस जो कि चाहते हैं कि वहाँ लोग ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, बिकॉज़ सब ओंटारियो में आना चाहते हैं। So in order to develop their economy, they have their own immigration program. So there are some provincial programs as well. I don't know, maybe I just talked more than what you really needed, but as much as I could cover in नहीं a नहीं few minutes, I did. नहीं नहीं I think that was very very relevant, and thank you for sharing the info. So from what I understand, it's the main program is the federal skilled workers program. Just there's a point based program in which they see your education experience, relations, if you have family over there, your English language skills. If you don't make the cut over there, from what I hear, so the cutoff, like you mentioned, it's very high, especially after COVID. So जो उसमें नहीं आ पाता, वो या तो एजुकेशन में जाए, ना एजुकेशन स्ट्रीम करे, and then they get the job over there, or they apply for PNP, which is a provincial program. What about getting a job? A lot of people say, okay, yaar, why don't you apply for a job from Pakistan and just get the job and then just move? So मुझे ये चीज़ कभी समझ ही नहीं आई. Why would they even hire people from here if they have a lot of people over there already? Yeah. But ये कैसे होता है? And especially इसी के साथ I'll attach the next question. How do people find the right job over there once they reach? So what things that they need to see? So like you mentioned, it took you 3 months and you recommend 6 months. But अगर कोई move हो जाता है, so what would you recommend? The second part is, what would you recommend कि अच्छा यार ये चीज़ें करना so that you are able to get the right job? यार ब्यूटीफुल क्वेश्चन। वन इज जॉब बाहर से बैठ के, मैं तो बल्कि लोगों को ये कहता हूँ कि अगर आपके पास पीआर है भी, सो दिस वाज द केस विद मी। आई डिड माय लैंडिंग, आई केम बैक टू एंड डिड कंटिन्यूड विद माय जॉब, और मैं साथ साथ अप्लाई भी कर रहा था कि यार मैं अप्लाई करता रहता हूँ। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू गेट अ जॉब ऑनलाइन। आई नो फ्यू पीपल, आई नो फ्यू फ्रेंड्स जिन्होंने रिमोटली बैठ के जॉब ले ली है, बट दे डिड हैव द पीआर, and they would go online and pretend that they are not in Dubai and they are not in Pakistan, और कहते हैं हम तो बस कनाडा में बैठे हैं और आप कल बुलाएंगे तो हम कल आ जाएंगे, जबकि वो अपनी कोई नौकरी पाकिस्तान में उनकी या मिडल ईस्ट में चल रही है। इट इज़ वेरी रेयर। होता है कि अगर उनको हल्का सा भी पता चल जाए कि दैट्स द केस, दे थिंक यू आर नॉट इंटरेस्टेड, लाइक समवन हु इज नॉट हियर, आई रादर हायर समवन जो कि यहाँ इंटरेस्टेड है। एक चीज़ ये, दूसरा ये कि कंपटीशन इज वेरी हाई बिकॉज देयर इज सो मच स्किल्ड लेबर हियर. And Canada, I believe, has not even kept up with the infrastructure investments and the job investments. So jobs उस growth से नहीं बढ़ रही जिस growth से immigration बढ़ रही है. Eventually, I think बढ़ जाएगी because everything catches up, economy grows as population grows. But the growth in the jobs or economy is slower than the population growth. और उसका challenge ये है कि there are less jobs and there are more competitive people because अच्छे skilled labor आ रहा है सारा. Unless you are someone who has a very specialized skill, I don't know, a nuclear scientist, or someone, an actuarial scientist, I'm not that, or someone who's done a CPA from Canada, already has a CPA, like someone who's done an MBA. No, I don't think बहुत MBA तो पाकिस्तान में बहुत MBA है, वहाँ तो और भी MBA भरे हैं. So no, you don't have a chance. उस तरह से बिल्कुल नहीं होगी. You have to go through the either if someone really gets a job with a very basic standard MBA, I would be surprised unless someone gave them that fraud thing, and I wouldn't recommend doing that. But otherwise, you really have to be there to get the job. अच्छा, अब उस पे बात कर लेते हैं, which is how to find a job. So let's say you have the PR, you come to Canada, and now you're looking for the job. एक तो जिस तरह मैंने पहले कहा, you have to have the right mindset, which is, if I'm here, I will make it happen. And even if that means I'll sell pizzas. And I'll tell you, people have told me this. जब वो आते हैं, उन्होंने कहा कुछ भी कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे. This is my time frame. If I don't get anything in 3 months, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ. With that mindset, they always make it. Because
even when they go in the interview, they tell the recruiter कि यार मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ. I'm there. I can spend days. I can spend nights. I will work hard. And this is what people are looking for. As I said, people want to hire people who are passionate, have the right attitude versus ये कि मेरे skills हैं. So that mindset is very important. अच्छा, दूसरा ये कि अपनी expectations बिल्कुल सही रखें. आपको वो level की job नहीं मिलेगी जो आप छोड़ कर आ रहे हैं. इसमें एक और एंगल है जो कि मैं लोगों को कहता हूँ कि इफ यू कम अर्ली, द यंगर यू कम द बेटर, बिकॉज आपको ईगो हर्ट कम होती है. मैं सीएफओ एज अ सीएफओ आ रहा था, मेरी ईगो हर्ट बहुत मैसिव थी. एज अ सेड, मतलब मैंने बहुत अरसे तक अपनी लिंक्डइन पे प्रोफाइल भी अपडेट नहीं की कि यार मैं रैकेट में जो हूँ वो एज अकाउंटेंट हायर हो गया हूँ. मैंने कहा लोग क्या कहेंगे टाइप चीज, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे although comparison is not good and you should not be thinking that way, but we are social animals, so there is a factor in our DNA which makes us think this way. So keep that expectation. Yeah, it doesn't matter. I'm coming here to build a life here, and a quality life. There is immense quality. Your quality of life will just change, especially when you're coming from Pakistan. Maybe Middle East itna fark nahi, delta nahi hai. Usse all different benefits. And by the way, I have another video where I talk about why I left Middle East and moved to Canada. Not just because Middle East was not long term, but there were a lot of other things as well. But coming back to the Pakistan piece, you'll find better quality of life. But you need to have that mindset here. I'm okay to go 2-3 levels down, and I will make my way up, because once you will prove, और हम जो इमिग्रेट्स होते हैं हम वैसे ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं, बिकॉज वी हैव टू मेक अ पॉइंट, वी हैव टू प्रूव. और दूसरा, मैं उन लोगों को यहाँ भी समझाता हूँ, स्पेशली जो वाइट हैं, उनको कहता हूँ कि यार हमारा एक चैलेंज है कि हमारे पास सोशल सिक्योरिटी नहीं है पाकिस्तान में. सो हमारी सोशल सिक्योरिटी हमारे बच्चे हैं. इसके अलावा हमारे जो है रिलायंस इज के बच्चे हमारे हैं, वो सोशल सिक्योरिटी है, हमारी और कोई नहीं. सो फॉर एन इंडिविजुअल इन पाकिस्तान, ग्रोइंग इज सर्वाइवल. इफ यू स्टॉप ग्रोइंग, you don't survive, you just die. So there is no survival. There is growth or there is death. आपके लिए सर्वाइवल है कि यार ठीक है, मतलब मैं इस रोल में बैठा हूँ, पिछले 10 साल से बैठा हूँ, एंड आई एम सर्वाइविंग, आई एम गुड. ये कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता जो लो इनकम कंट्रीज हैं साउथ एशिया में स्पेशली. सो वी आर मोर हार्ड वर्किंग एंड पीपल अप्रिशिएट दैट. तो ये दो चीजें हैं मेंटल गेम, ये आप बिल्कुल स्ट्रेट करके हैं. अच्छा, फिर जॉब मिलती है नेटवर्किंग से. अब उसको आप पवा कह लें, वास्ता कह लें, वट एवर, बट इट इज थ्रू नेटवर्किंग. यू हैव टू फाइंड समवन इन द कंपनी. फॉर इंस्टेंस, इफ इट्स फूड पैंडा, I have to find Umar, and what I will do is I'll say, okay, Umar, you know me from our days in university or college, let's say. I have to find a relationship as well. And then, can you please help me with the resume? Again, I have a very detailed video on the fastest way to get a job in Canada, but just to give a summary, you find the right connection. What I tell people is make the list of all your friends. और वो फिर किस-किस कंपनी में काम करते हैं, और वो किस किस कंपनी में लोगों को जानते हैं. कि एक्सेल में आप लिस्ट बनाएं और फिर देखें इन सब में से आपने किन कंपनीज में काम करना. सो टॉप 5 कंपनीज आप निकालिए, क्योंकि हो सकता है आपके फ्रेंड्स बैंक में भी काम करते हैं, बट मेरा बैंक का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, सो आई जस्ट टुक ऑफ बैंक. और टेलीकॉम और व्हाटएवर, मेरा एक्सपीरियंस सीपीजी का था. सो 5 कंपनीज जैसे कोक, पीएनजी और कोई एक आध लोकल कंपनीज यहाँ की. एंड देन आई पुट अ जॉब नोटिफिकेशन ऑन माय लिंक्डइन कि जब इस कंपनी में कोई जॉब ऑफर आएगी which is relevant to my profile, I will get notified by LinkedIn, and then I will reach out to these individuals and say कि आपकी कंपनी में opportunity आई है, you know me, and can you please pass on my resume? And that is how your resume kind of gets to the desk. Because other time, जैसे मैंने कहा कि हाँ challenge ये है कि you don't have Canadian experience, so resume select ही नहीं होता, because वो देखते हैं ये Canadian experience नहीं है, they won't even call you for the interview. So you'll have to use the network. अच्छा, फिर कुछ कंपनीज होती हैं जहाँ नेटवर्क एग्जिस्ट नहीं करता, तो वहाँ आप क्या करें. अच्छा, मैंने उसके लिए फिर ये किया था. आई यूज्ड टू प्ले अ कार्ड व्हिच आई से इज फाइंडिंग सम रिलेटिविटी. सो फॉर इंस्टेंस, आई वुड वॉलमार्ट में एक अपॉर्चुनिटी आई थी, आई रिमेंबर, फाइनेंस डायरेक्टर, एंड देयर वाज, आई चेक्ड कि वॉलमार्ट में कौन-कौन लोग काम करते हैं, तो लिंक्डइन में तस्वीरें आ जाती हैं. तो आई सॉ देयर वाज दिस ब्राउन गाय, एंड फ्रॉम नेम आई कुड टेल ही इज फ्रॉम इंडिया. काफी देयर आर सर्टेन नेम्स व्हिच आर वेरी डिस्टिंक्ट टू इंडिया, पाकिस्तान, सो there was good chance कि वो इंडिया से होगा. And then I checked as well, profile वो इंडिया से ही था, but वो 4 साल पहले कनाडा मूव हुआ था. So I don't know that guy, he doesn't know me, but he moved 4 years ago. Brown guy from South Asia, kind of speak the same language, unless he's from south of India, and he moved recently. So I was like, this guy went through the same experience that I'm going today. So I just messaged him saying, I just moved, this is my profile, this is my experience, I think this job fits my profile, and I'm looking for a job. And suddenly he responded back.
And I understand why he responds back, because I respond back to people as well when they reach out to me, because I've been through that same experience where I was dying for a job and I would reach out to people, and he had the same experience as well. So try to, if when you don't find a job, anyone in the company which you're looking for, try to build some relativity with that individual. It could be color, caste, religion, whatever it is. College, same university, same religion, maybe same. I also played the card of Procter and Gamble, but ये benefit सबको नहीं होता, because Procter and Gamble multinational company है. So there were individuals who were working in, let's say, Johnson and Johnson Canada, and previously they worked in Procter and Gamble. I don't know them. वो किसी और country में काम करते. Let's say they were always in Canada, but it was always easy for me to say I'm a P&G alumni. You don't know me, but I worked on these assignments. They can relate to my resume. They can see my resume, and they can relate to me. So my success rate for response from that way was also pretty high. So that's another piece I recommend. And last thing that I want to say, which I think I kind of touched before as well, the element of change management, because continents change करना अपनी family के साथ ये आसान नहीं है. लगता बहुत आसान है कि यार बस मुल्क change कर लेंगे. It's not an easy thing. It's a very hard thing to do. As I said, I left my job. I was up, sleepless nights and all, finding a house, establishing yourself here. Use that card as well when you're trying to get a job. Play on that passion. The way I played on my passion from coming from a small city, small background, poor background, and making my way up when I was getting into P&G, I would use the same thing coming from Pakistan or Middle East, moving here, assimilating myself here, connecting with the culture. So they see you trying hard. And as I said, hard time is your asset. So they take it as an asset, and they give you get better chance of getting that opportunity just because they see it in your eyes that you're someone who will make it happen, because your change management is just through the roof. Great. And yes, definitely. I think I've been through, if not thousands, then hundreds of interviews, and you're definitely spot on. If I see passion, if I see someone who is, अगर मुझे एक बंदा ये भी बोल देना कि अच्छा ठीक है, scale wise it's probably a 7 on 10 and not a 10 on 10, but I feel that the person just says, I'll just get the job done. I'll give all of my effort. I'll get the job done. वो जो passion होता है, वो जो drive होता है, even that is sometimes enough to say, यार, okay, maybe we should give this person a chance. So definitely spot on. But tell me something. You mentioned challenges. Obviously, you moved there without a job. You had to establish yourself, get a house. You had a family to take care of. Like you were secure financially for 12 months, but still at the back of your mind, you must be thinking, okay, these are my savings. I need to just get the job quickly so that I don't use all of my savings. If a person moves right now in the current scenario, with the current how the world is moving right now in terms of inflation, in terms of job market in Canada, like you mentioned, a lot of skilled labor versus the opportunities. What are the major challenges that you feel for professionals today who move to Canada? There's a lot of articles that I read. And a lot of people who have posted their videos can move to Canada, but I don't have the right kind of job. Or they say our life is very difficult. I just work and I pay my debt, and then I work and then I pay my debt. So I don't know why am I here. Or the third cheese, which is the favorite thing to say for South Asians, you wake up in the morning and you have to clean snow out of your outside your house, and then you have to go to office and then come back, and the expenses are so high. So क्या challenges हैं? Is it worth it? Is it I know definitely you'll say it's worth it, but inflation, quality of life, ठीक है, coverage मिल गई आज के ज़माने में, do you think this is worth it, the challenges that people have to face? Yeah, this is the best question you've asked. सारे questions अच्छे थे, but ये बहुत आला question है, इसलिए because you need to know what you're signing up for. And I was very clear. मैं Canada जब land किया था, I fell in love with the country. When I was greeted by the officer, और मैं मिडिल ईस्ट से आ रहा था. आप मिडिल ईस्ट में जरा इमिग्रेशन की लाइन पे खड़े तो हों, आप सूट पहन के चले जाएं, आप टाई पहन के चले जाएं, they can tell you're Pakistani, and the treatment you get is way different versus what a white person would get. And the officer in Canada, the way he greeted me, the smile on his face, and he said, "Welcome home, sir," and everything. मतलब मुझे आधा प्यार तो मेरा वहीं डेवलप हो गया था मुल्क के लिए. मैंने कहा यार इतना प्यार
अपने मुल्क में, अपने रीजन में नहीं मिलता जितना इसने रिस्पेक्ट दे दी है मुझे। मुझे तो डर लगता है अच्छा इमिग्रेशन लाइन पे। यू राइट। एग्जैक्टली क्या बोलेंगे, क्या एग्जैक्टली। अच्छा, ढूंढेंगे? you don't get this in US, by the way. US में they're not not good, but Canadians are just amazing on different planet. अच्छा, दूसरी चीज आ जाती है क्वालिटी ऑफ लाइफ। यू नीड टू डिफाइन क्वालिटी ऑफ लाइफ आपके लिए क्या है। देयर आर पीपल जो कि मिडिल ईस्ट से आते हैं, बोलते हैं यार यहाँ तो मेड नहीं है, पाकिस्तान से आते हैं वहाँ तो हमारे पास हेल्प थी, वहाँ हम कुछ भी बोलते हैं देखो काम हो जाता है। अच्छा, मैं अब यहाँ I'll be more philosophical as well and I'll start touching upon the things I said, the reason I left, one of the reasons I left Dubai as well. मैं उन लोगों को एक किस्सा सुनाता हूँ। In Dubai when I would be driving, I'm sure you visited Dubai as well, और आप जब सिग्नल पे कभी-कभी गर्मी में खड़े होते हैं जून की, there will be a bus which will come next to you. उसमें कोई एसी नहीं होता, शीशे उसके खुले होते हैं, उसके अंदर वर्कर्स बैठे होते हैं, उनके ऊपर पंखा चल रहा होता है and they are melting. And my daughter would ask me कि इनमें और हम में क्या फ़र्क है? And I can't explain. And I felt the same challenge in Pakistan as well. जब आप बाहर अपने ड्राइवर को या अपनी मेड का जो सेग्रीगेशन रखते हैं, जितने हम बन जाएं अच्छे कि यार हम तो हम स्लेव्स की तरह ही ट्रीट करते हैं ना, उसमें वो लोगों का ये भी आर्ग्यूमेंट होता है यार इनको इस तरह नहीं ट्रीट करोगे तो ये लोग सर पे चढ़ जाते हैं, व्हाटएवर, आई डोंट नो, but at the end of the day the I get your treatment point. is very different, right? So it is very hard for me to explain to my daughter कि यार ये और मैं different क्यों है। अच्छा, मेरे बच्चे दोनों they were born in Dubai, so I found it very challenging and I'm like यार ये segregation मैं समझ नहीं सकता। So अगर तो आपके लिए क्वालिटी ऑफ लाइफ ये कि यार मेरे पास मेड है और मेरे पास ड्राइवर है और बस सब मेरा रोब है, दबदबा है और मैं CFO हूँ, मुझे जब अकाउंट खुलवाना होता है तो मैं आई रिमेंबर व्हेन आई केम एज P&G पाकिस्तान CFO, मुझे बैंक अकाउंट खुलवाना था तो ब्रांच मैनेजर केम टू द ऑफिस, सर अकाउंट खोल देते हैं, और वो बंदा मेरे डेस्क पे रोज अखबार लाके रखता था, चाय का कप रखता था। एंड अगर तो आपको इन चीज़ों का शौक है कि यार मुझे चाय का कप सलूट मिल रहा है, मेरे पास मेड्स हैं जो कि पैर दबा रहे हैं, ड्राइवर हैं, then this country is not for you. Then you stay there, you enjoy that bubble, that keep, and maybe there are people who are like that. For instance, मैंने दुबई में भी I tried keeping maids, I did keep it, but it just didn't work for me because I found it very expensive. मुझसे वो हो नहीं रहा था कि यार मैं उनको एक लो क्वालिटी ऑफ लाइफ की तरह ट्रीट करूं, and I couldn't just afford it because अगर मैं उनको बिल्कुल अपनी तरह ट्रीट करूं, it was very expensive for me. So I decided कि यार I'll get rid of them. It didn't work out. एक दो बारी मैंने try किया, it just didn't work out. I just didn't feel it. So me and my wife were very comfortable not having that help. Mm-hmm. तो ये एक और चीज है कि what kind of life, what is quality of life? मेरे लिए quality of life ये कि जहां मुझे ना गरीब और ना अमीर नजर आए और मुझे ये एक्सप्लेनेशन ही अपने बच्चों को नहीं देनी पड़े कि यार ये क्यों है। अच्छा, दुबई में फिर एक और चैलेंज ये था जो कि पाकिस्तान में भी हो सकता है। माई डॉटर और माई किड्स वुड गो टू स्कूल इन कार, और वहाँ जो स्कूल जा रहे हैं वहाँ भी सब अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी गाड़ियों में आ रहे हैं क्योंकि हमने रहना अमीरों के और कोई ऑप्शन भी नहीं है। सो यू हैव टू आई हैव टू सेंड माई किड टू द बेस्ट स्कूल, और ये प्रेशर भी है बिकॉज सब अपने बेस्ट स्कूल में भेज रहे हैं। अच्छा, while I'm explaining this, लोग अमूमन ये भी कहते हैं यार आप डिफरेंट हो सकते हैं, you don't need to be, क्योंकि दुबई में एक और रेस ये कि मेरे पास बेस्ट गाड़ी है, मेरे पास बेस्ट घर है, मेरा बच्चा बेस्ट स्कूल में पढ़ता है, तो मैं ये कहता हूँ यार यू डोंट हैव एन ऑप्शन बट टू बी पार्ट ऑफ दैट रेस। और लोग कहते हैं नहीं यार आप बिल्कुल आप मंक बन जाएं, आप लोगों से आप इससे इन्फ्लुएंस ही ना हो। उसका चैलेंज क्या है? उसका चैलेंज ये है कि मेरी बेटी को और मेरे बच्चे को दे आर इनवाइटेड इन बर्थडे पार्टीज and they will go and attend a birthday parties where you spend like the parents will spend $5,000 for that birthday party. अच्छा, अब मेरे बच्चे की बर्थडे आ रही है तो मैं क्या करूंगा? मैं $1,000 में कर दूंगा बर्थडे मैं तो कर लूंगा, बच्चा क्या कहेगा? So I decided it is not, this is a never ending race that I will be in and I just want an out from this. और कनाडा, although US इतना नहीं है, US में फिर भी थोड़ी सी रेस है, but Canada is just amazing in those terms. You don't find that pressure, क्योंकि कनाडा में जो आपसे 2 लेवल सीनियर भी है ना, वो भी टैक्स कटा के उसी तरह की क्वालिटी ऑफ लाइफ जी रहा होता है जो आप जी रहे होते हैं, और आपसे 2 लेवल लोग नीचे जी रहे होते हैं क्योंकि टैक्स रेट इतना हाई है कि द मोर यू मेक द मोर यू पे एंड यू एंड अप काइंड ऑफ लिविंग द सेम काइंड ऑफ लाइफस्टाइल। अच्छा, ये एक चीज है। दूसरा, क्वालिटी ऑफ लाइफ आप एक्सप्लेन करें। अच्छा, मेरे लिए ग्रीनरी बहुत इंपॉर्टेंट थी। Greenery, I go out on walks, I have a bike, which I bike ride, like road bike है मेरी, so मैं वो काफी यूज करता हूँ, मुझे हाइक्स का बहुत शौक है। तो दुबई में क्या होता था? दुबई में we would have to fly out
every time we had to take a vacation because वहाँ greenery नहीं है, वहाँ वो funny. So दुबई में it's very typical that you have to fly out और सस्ते सस्ता आपको जॉर्जिया मिल जाएगा अगर आपने बहुत सस्ता भी करना है. तो मैंने अपनी वाइफ के साथ जब मैथ की, we came here, we is like, okay, we won't earn the same amount of money we were earning in Dubai, पर हम क्या करें, वेकेशंस का क्या करें, फन का क्या करें. एंड आई वाज लाइक यार यहाँ गली से अगर 5 किलोमीटर अगर आप ड्राइव करें आपको एक प्यारी लेक नजर आती है. इट इज ब्यूटिफुल माउंटेन्स, ब्यूटिफुल ग्रीनरी. Frankly speaking, if I can't afford traveling outside on aeroplane, I am where I usually would want to go and fly out on aeroplane. So let's take out the vacation piece altogether from the equation. I'm okay earning less, but then I'll spend less because मैं वो सारी vacation पे पैसे खर्च कर ही नहीं रहूंगा जो हम पाकिस्तान में बैठ के हर साल की 2 वेकेशन या दुबई में बैठ के साल की 2 वेकेशन या साल की 1 वेकेशन करते ही करते हैं. आई फ्रेंकली स्पीकिंग आई डोंट इवन नीड टू मूव आउट ऑफ माय सिटी. इवन यूएस में भी मैं जहाँ रहता हूँ, इट्स सो सीरीन, इट्स सो ग्रीन, सो ब्यूटीफुल कि इट्स जस्ट अमेजिंग. सो आई डोंट लुक फॉरवर्ड टू दैट. अच्छा, मेरी बेटी जो है, बच्चे दोनों दे वॉक टू स्कूल बिकॉज पब्लिक स्कूल है और नेबरहुड का स्कूल है. सो वो कोई नहीं है कि गाड़ी आएगी, ड्राइवर आएगा, ड्राइवर ड्रॉप करेगा. दे वॉक टू स्कूल. सो I'm living the kind of life, or my kids are living the kind of life I lived when I was young. जब मैंने रक्षा भी लिया है, बस पे भी ट्रैवल किया है, पैदल भी गया और कभी-कभी बिल्कुल जेब में पैसे नहीं भी थे. But that all was in a very challenging environment जहाँ सिक्योरिटी का थ्रेट भी है. आप अपनी बच्चे को बाहर इस तरह छोड़ नहीं सकते. शायद हमारा टाइम पे मतलब जो when I was young, it was still relatively safer and things are getting worse and worse. मेरी बच्चों को वो चैलेंज नहीं है, but they are kind of living the same lifestyle in a more secure and still protected way. So मैंने कहा मतलब वो she bikes to her friend's place. अब उस दिन मुझे कहती है मुझे ड्रॉप कर दो यहाँ नेबरहुड में. नहीं, I won't drop you. It's a safe community. It's a safe. अब इसमें भी खैर डिपेंड करता है. There are communities which are not safe in Canada and all, so you'll have to pick where you live and all. It's not like सभी अच्छा है यहाँ. But generally speaking, this is quality of life for me. Greenery, my kids just walking to the school, playing in the playground जहाँ मुझे देखना नहीं पड़े कि यार playground में मुझे साथ रहना है उनके, और playground exist भी करता है यहाँ. And all of that. Of course, I make less money. I make less money than I was making in Middle East, in Dubai, but I spend less as well. And I get all the benefits. So जिससे मैंने कहा कि मुझे वो stress नहीं है कि आज अगर मेरी नौकरी चली जाए ना, my kids will keep going to school. I will still have medical. Now, मुझे घर का mortgage of course देना है, but if I manage अपनी लाइफ से थोड़ी सी और स्केल डाउन कर दूं, तो मैं चूंकि आई अर्न वेल, माय वाइफ वर्क्स हियर एज वेल, मैंने अपनी लाइफ थोड़ी सी इन्फ्लेट की हुई, बट इफ यू कैन स्केल डाउन योर लाइफ यू शुड बी गुड. अच्छा, एक और एलिमेंट ये कि विच इज इट इज इम्पोर्टेंट दैट बोथ पार्टनर्स वर्क. ये भी एक चैलेंज होता है कि यार पाकिस्तान में वाइफ आपकी काम नहीं कर रही या मिडल ईस्ट में नहीं कर रही तो आपकी वो भी एक ऐसी लगेगी कि घर का सारा काम मैनेज हो रहा है. सो या यू हैव टू कंट्रीब्यूट. सो आई मोw my lawn, I clean up the snow, and I contribute in the house as well. There are times when I cook the dinner. There are times when my wife cooks the dinner. और हमारे father भी साथ रहते हैं. So there are times my father cooks the dinner for us. Everyone is kind of contributes equally, and I love this. But अगर आपको ये लगता है कि नहीं यार मैं तो खाना ना मुझे बनाना आता है, ना मुझे शौक है, ना मुझे टच करना है, ना मुझे स्नो को टच करना है, हाँ, तो फिर आप नहीं आए यहाँ. फिर आप पाकिस्तान में रहें. अच्छा, और यहाँ आपको बहुत नेगेटिव लोग भी मिलेंगे. लाइक आई रिमेंबर ये एक और टिप है बाय द वे फॉर पीपल हु आर कमिंग न्यू. Stay away from negativity, because I ended up meeting a negative guy, and that night was a hell for me. I was like, what have I done? Why am I here? और वो बंदा इस तरह की बातें करता है, यार हम तो फ्रीजर में रहते हैं, ये देखो वहाँ पाकिस्तान में मेरे पास जो है मैं एक कॉल पे मेरा काम हो जाता था, यहाँ मुझे जो है वो बैठ के फॉर्म भरना पड़ रहा है किसी, आई डोंट नो, ही वाज फिलिंग अप सम फॉर्म, and नौकरी सही नहीं है, ये सही नहीं है, वो सही नहीं है. And I was so miserable that night. And next day I woke up, I was like, okay, I'll make a list of all the negative people I've come across in past 1 month in Canada, and इनके घर में आइंदा जा ही नहीं रहा. ये बुलाएंगे, कुछ भी करेंगे, I'll just stay away from that. So that is another thing I recommend. Stay away from negative people, talk to positive people, connect with them, they will lift you up, and that's pretty important. So I don't know, maybe I just said a lot that versus what you were hoping for, but I think that was a very comprehensive answer, and matlab in the end it depends on what exactly you want. And while you were telling me this explanation, that I could think about some of my friends जो हमारी discussions होती हैं, you know, some would say यार what क्या फायदा उधर जाने का, and some would say यार नहीं, this is the lifestyle that we have. And the thing that you mentioned about how you related it to the quality and how
I should put Pakistan with this class system that is there, na, that you have to be like this, or even in the Middle East or Dubai. And now in Canada, you like how your family is being brought up, how your children are looking at things, how everyone is contributing in the house. वो जो part है, I think again it depends on what, how do you define the quality of life and what challenges are you ready to take. यार एक चीज मैं और ऐड करूं, and because you said it and I liked it, which is your kids also see you doing all this, right? So जब वो देखते हैं कि यार आप अपनी वाइफ का हाथ बढ़ा रहे हैं किचन में, Mm, या आप बाहर लॉन मो कर रहे हैं या ग्रास साफ कर रहे हैं, they also learn from you. क्योंकि हमने तो यही सीखा ना कि यार सब काम तो नौकर कर देगा। तो पानी भी मुझे याद है, मैं I remember there was once we had a काम वाला at house and I said कि पानी मुझे ला देना, and my father just got angry. He was like, how dare you ask for water from him? And I was like, well, you pay him, he's here in the house, you ask him for a lot of work as well, because I learned from my father, right? I would see my father asking for things, but when I would ask, my father said, no, don't do it. But I was like, okay, I won't do it. And I stopped doing it because I realized it's not good. But मैंने ये भी सोचा कि यार खुद तो कर रहे हैं. But here I set an example for my kids, right? So because I don't do it that way. So I think you kind of, as you rightly said it, and just building on that, that you set the right example for your kids here. But again, I don't say anything. मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि यार यही सही तरीका है या यही गलत तरीका है. So मैं ये बिल्कुल preach नहीं करना चाह रहा. But all I want to do is be aware who you want to be, because you will be a very different person here. indeed. I think we've had a great discussion, and we're entering almost the second hour. We're closing the second hour, and we discussed about your journey, what tips you have for finance professionals. Especially, I think if I wasn't aware of it honestly, but your page that relates to immigration, moving to Canada, the challenges. I think that is something that people can look at, and I think that will give a lot of explanation, that will give a lot of perspective to people on what exactly they should be looking at. So that these two themes, I think that covered a lot. As we move to the end, I would like to ask you a question, because I which relates to pessimism in, especially in this part of the world. क्योंकि मैं LinkedIn में बहुत एक्टिव हूँ, एंड आई नो इवन जो जॉब्स भी हैं जो लोग लकीली इंजॉय करते हैं, अच्छी जॉब्स, दैट्स लाइक 5, 10, 15, maybe 20% of the workforce, 15% I would say. The rest, for me, and that is a pain point, are struggling. Why do I say struggling? Because the Pakistani system is such, unfortunately, that is such that if you have money, you go to good school, private school. If you get good education, you build a great network of friends who help you in future in your life. If you do, for example, O and A levels, only then you will go to great universities. Others can also go, but OA levels are better groomed and better prepared and have a better network. The softer side of a better developed. Once you go to great universities, you end up having great jobs. This is how the system works, and this is 10 to 15% of the total workforce. What bothers me a lot, and it breaks me, is that the rest of the population, they're just struggling. And I say struggling because उनको वो opportunity मिली ही नहीं है, उनको वो environment मिला ही नहीं है in which they're well equipped when they enter the workforce. So my question to you is, what message do you have for those people who have lost hope, or who are just struggling every day to reach a leadership position? Why do I say leadership position? अगर आप जॉब कर रहे हैं, obviously आप चाहते हैं आप सबसे टॉप पे पहुंचे. जिस तरह आपने ही बोला था, जब आपने ज्वाइन किया, you used to look at the CFO at that time. कि यार मुझे प्रोग्रेस करना है, मुझे कुछ अच्छा करना है, बिकॉज एक बंदे की जॉब अच्छे होने से पूरी लाइफ उसकी फैमिली की भी चेंज होती है. इट्स नॉट जस्ट अबाउट दैट पर्सन. मैं व्हेन आई एंटर्ड द वर्कफोर्स from where I am right now, my whole it's not just I enjoy the position that I am at, my whole family enjoys that position and the quality of life that I have. So what message do you have for those people, especially in Pakistan, who have lost hope, and if not, if they haven't lost hope, they're struggling every day to make ends meet, and they want to reach the top? What do you think they should be thinking right now? What thought process they should have? Yeah, very good question, and a difficult one as well. But let me try to handle this. पहली बात जो मैं करूँगा इसमें, which is this too shall pass. अगर आप अच्छा फील कर रहे हैं, लकी फील कर रहे हैं,
बहुत टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे हैं, दिस विल पास एज वेल। और अगर आप बहुत बुरा फील कर रहे हैं, थिंग्स आर बैड, दिस विल पास एज वेल। बिकॉज टाइम जो है ना यार, उससे बेहतर हीलर नहीं है। सो दिस व्हाट आई एम सेइंग इज आउट ऑफ होप। सो यू नीड टू कीप होप, बिकॉज जो भी आज सिचुएशन है वो अच्छी हो या बुरी हो, ये दिस विल पास। मुझसे अगर ये सवाल किया जाता ना, एंड इफ यू वुड हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन, व्हाट इज वन थिंग यू विल चेंज इन योर लाइफ, एंड आई हैव सीन अ लॉट ऑफ हार्ड टाइम्स बाय द वे। मैं जो आज जिस तरह से अंग्रेजी बोल सकता हूँ, ये मैं इसकी 10% भी नहीं बोल सकता था व्हेन आई वाज इन क्वेटा। मैं लोगों को ये बताता हूँ कि यार मैं पढ़ा को एजुकेशन स्कूल से हूँ वहाँ, बट वो को एजुकेशन स्कूल ऐसा था कि वो लड़कियां एक कोने में बैठती थी और लड़के एक कोने में बैठते थे, और अगर किसी ने गलती से बात भी कर ली तो वो एक स्कैंडल बन जाता था। सो वो नाम का को एजुकेशन था, और पता नहीं पेरेंट्स ने डाल भी क्यों दिया था, सच यही सोच के डाला था कि प्रोग्रेसिव स्कूल होगा, बट वो कोई उसमें ज्यादा कुछ, आई थिंक इट वाज स्टिल प्रोग्रेसिव देन मेनी अदर स्कूल्स इन क्वेटा। But when we came to Karachi and Islamabad, we realized कि यार यहाँ तो life ही different है. When I was in college, I couldn't make friends for the first year because I didn't know how to speak to the opposite gender to begin with. ये बात मैं बहुत कम करता हूँ, और but I'm just और for that matter वहाँ के लोगों से भी, मतलब I just didn't know कि यार इनसे मैं यहाँ contribute कैसे करूँ, present कैसे करूँ, बात क्या करूँ. So it was very challenging. So I can relate to when people come from less privileged backgrounds. I've seen it. Now, my background was still much privileged than many others that I've seen in my city. So ऐसा नहीं है कि मैं अपने city में I think I was the privileged one, but when I would compare myself with other cities, I was pretty underprivileged. But to the question I was saying, if you ask me the question, what is one thing you would want to change in your life? I would say nothing, except I would tell my younger self that this too shall pass. So ज़्यादा stress नहीं लेना, as in keep stress as low as possible because ये गुजर जाएगा. So whoever is in a situation, ये time गुजर जाएगा, और जब अच्छा time आएगा वो भी गुजर जाएगा. So you should always be ready for tough times to come again. और वो एक different तरीके से होंगे, different challenges से होंगे. बेशक अगर आप कनाडा में आ जाएं, मतलब आपको कोई बच्चों का challenge आ जाएगा, आपको कोई spouse का challenge आ जाएगा, economic challenge आ जाएगा, यहाँ की job का challenge आ जाएगा, यहाँ challenges और किस्म के. You'll always have some kind of test or exam going on. So ऐसा नहीं है कि बस आप बोलें यार ये पाकिस्तान की लाइफ बुरी है, एक बारी बाहर चला जाऊंगा तो बाहर सब अच्छा है. यहाँ फिर एक प्रॉब्लम एक नई तरीके की शुरू हो जाती है. अच्छा, दिस इज वन फॉर कीपिंग होप. सेकंड इज यार ये टाइम, दिस टाइम, लाइक this century, this era is one of the best times because you can teach yourself almost anything for free. प्रेजेंटेशन कैसे देनी है, अंग्रेजी कैसे बोलनी है, अपना को प्रेजेंट कैसे करना है. लाइक आई हैव अ चैनल, लाइक यू हैव अ चैनल, यू पुटिंग सच ग्रेट कंटेंट जिससे मैं सीख लेता हूँ. अपने ये बैरियर अगर आप हटा दें कि यार आई एम रेडी टू लर्न, एवरी डे आई सिट एंड 1 hour आई लर्न समथिंग एंड आई विल अप्लाई. अच्छा, the reason I started producing content on LinkedIn and YouTube was because I was teaching myself. मैं लोगों को मुंह ने एक बात भी कहता हूँ when they say कि यार हम भी कुछ क्रिएट करना चाहते हैं कंटेंट, हम क्या करें, क्या कंटेंट क्रिएट करें. मैं कहता हूँ क्रिएट द कंटेंट दैट यू कंज्यूम, बिकॉज दैट इज हाउ यू काइंड ऑफ टीच योरसेल्फ. तो मैं जो भी बुक्स पढ़ता हूँ, मुझे अगर कुछ चीज अच्छी लग जाती है, बोलता हूँ इसको मैं कैसे अप्लाई कर सकता हूँ, अच्छा इसको मैं ऐसे अप्लाई कर सकता हूँ, एंड देन आई राइट अबाउट इट एंड देन आई पोस्ट इट और आई मेक अ वीडियो आउट ऑफ इट, एंड दैट इज हाउ आई टीच माई सेल्फ. So there is a lot of content out there. Just spend some time and teach yourself with intention. अच्छा, तीसरी चीज ये कि you have to see कि what is luck and try to be lucky. अच्छा, इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि अगर आप यूएस में बॉर्न हैं या आप कनाडा में बॉर्न हुए हैं या वेस्टर्न कंट्री में, suddenly you are more luckier than anyone born in a third world country, right? या आप कराची में अगर हैं वर्सेस क्वेटा में, यू आर मोर लकी देन, अगर आप लम्स में हैं, यू आर मोर लकी देन, एंड सो ऑन. अगर आप पीएनजी में, यू आर मोर लकी देन, एंड सो ऑन सो फोर्थ. सो ट्राई टू सी कि यार मैं वो लक अपने लिए कैसे क्रिएट कर सकता हूँ. उसमें दो चीजें, एक तो यू हैव टू फाइंड के वेयर इज द बिगेस्ट पाइल ऑफ लक. Let's say for me that was कि यार मुझे I cannot stay in Quetta because if I have to grow and develop, I have to move out of the city. So in my horizon, I was like, where is the biggest pile of luck that I can find? And I was like, it's either in Karachi or Islamabad or Lahore maybe. So I was like, I have to just go there. So I applied for some other universities as well, which were better than where I ended up with, which is also a good university, by the way. I don't need to undermine it, but in the top 1 or 2 universities in the world, and I couldn't
in Pakistan, and I couldn't make it. But I was like, I still need to be in that city, in that place, because I need to be closer to where luck exists, which is a big city. So run to the big city. Again, बहुत से लोग खैर कराची, इस्लामाबाद में या लाहौर में ही होंगे. Then find the community जहाँ luck exists करती है. People who are lucky and try to be part of them. Or the beautiful thing is, up to social media, if you cannot physically be part of them just because you don't belong to the same neighborhood, आप उनसे ऑनलाइन जो है कम्युनिटी क्रिएट कर सकते हैं, उनके साथ उनकी कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं. देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु जस्ट रीच आउट टू मी, कनेक्ट विद मी एंड टॉक टू मी, एंड आई एम वेरी फोर्थकमिंग बिकॉज मैं अपना कंटेंट प्रोड्यूस करता हूं. आई एम श्योर you're similar as well. अगर कोई मैसेज करता है, सिर्फ ये कहता है कि उमर, यू पोस्टेड दैट कंटेंट, इट वाज ब्यूटीफुल, आई लाइक्ड इट, मैं भी इसी तरह की कुछ चीज कर रहा हूं, मैं समझ रहा हूं, कर रहा हूं. Suddenly you feel like also contributing and helping them out. So all I'm saying is you can always make friends online with like-minded people, or people who are lucky, who you think are lucky. Like someone who would see me sitting in Quetta today would go like, this guy is lucky. So reach out to me, connect with me. You can always connect with and be closer to where luck is, because that's how you'll find opportunity. अगर आप उसी circle में फंसे रहेंगे जहाँ जो unlucky circle है, then you'll always be kind of struggling. अच्छा. Another advice I have is do it for free. So if you have to start, you're like, यार मुझे कोई जॉब मिल नहीं रही, कुछ नहीं, just do it for free. से कि यार ये मैं आपकी, फॉर इंस्टेंस मुझे कभी-कभी मैसेज आते हैं कि आपका YouTube का चैनल है, इसका SEO काफी बुरा है, I can do it. By the way, वो इंडिया से आते हैं मुझे ज्यादा, and I can fix your channel and I'll just do it for free for you. All I want is next time when you make a video, just throw in my name saying कि मैंने अपना SEO improve किया और उस SEO improve करने की वजह से मेरे X followers बढ़ गए, which would be true, and then you can just throw in my name. You just do it for free and advertise me. So I would be ready to do it if someone can improve my subscriber count and viewership on my YouTube channel. So think of things that you can do and just do it for free. You'll do it for free once, twice, thrice, and suddenly you'll be able to charge a lot for it because you have made a point. And the last thing I want to say is self-awareness, which शायद मुझे पहले बतानी चाहिए थी. Self-awareness is kind of the primary thing. वो बुल्ले शाह का शेर है ना कि वो पढ़ इल्म को फाजिल हुए, अपने आप को पढ़े नहीं. अच्छा, वो मुझे लगता तो बहुत अच्छा था, गानों में भी है, गाया भी बड़ा है. वो कभी मुझे समझ नहीं आया कि अपने आप को पढ़े या नहीं का मतलब क्या है. इट्स अबाउट सेल्फ अवेयरनेस, व्हिच इज नोइंग के व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, व्हाट आर योर वीकनेसेस, एंड हाउ यू ऑपरेट योर माइंड. सो इट्स लाइक हैकिंग योर ओन माइंड. फॉर इंस्टेंस, मुझे पता है अगर आज मैं दुबई वापस चला जाऊं ना, आई विल बी बैक इन द सेम रेस. आई विल बी लुकिंग फॉर द बेस्ट हाउस, the expensive car and the best vacation. और मुझे लोग कहते हैं कि यार अब जब तुम्हारे पास नेशनलिटी आ गई तो मिडिल ईस्ट वापस क्यों नहीं आ जाते, तुमको यहाँ जॉब भी अच्छी मिल जाएगी. आई एम लाइक, आई नो, because this is how my mind works, because now I'm self-aware. I know if I go back, I will be back in that circle, back in that rut, and I'll be doing the same things that I came out of. तो चूंकि मेरे जो, या कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं नहीं यार हम तो बहुत सेल्फ कंट्रोल है हमें, तो मुझे पता है मेरा सेल्फ कंट्रोल कहाँ है. फॉर इंस्टेंस मैं एक और बात ये लोगों को करता हूँ, यार अगर आपने वर्कआउट करना है, आई डू माई वर्कआउट इन द मॉर्निंग. मेरी विल पावर इज हाईएस्ट इन द मॉर्निंग. जब मैं शाम को घर आता हूँ, थक गया हूँ, अच्छा टीवी देख लें, कर लें, देयर इज अ लॉट ऑफ क्वेश्चनिंग गोइंग ऑन. सो माई सेल्फ अवेयरनेस हैज टोल्ड मी विल पावर इज हाईएस्ट इन द मॉर्निंग. अब चूंकि मैंने अपने आप को पढ़ लिया है, अपने आप को पहचान लिया है, तो मैं कहता हूँ यार यूट्यूब वीडियो बनानी है तो सुबह बनानी है, कोई प्रोजेक्ट करना है तो सुबह करना है, वर्कआउट करना है तो सुबह करना है, क्योंकि शाम को नहीं होगा. ये शाम को और 7-8 बजे के बाद तो बिल्कुल वो यूट्यूब वीडियो बनाना भी मेरे लिए एक अजाब हो जाता है, बिकॉज इट जस्ट टेक्स अ लॉट ऑफ टोल एंड लॉट ऑफ टाइम. सो रीड योरसेल्फ एंड नो दाई सेल्फ कि आपकी क्या लिमिटेशंस हैं, क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या वीकनेसेस हैं. और इसी में एक एंगल और है जो कि मैं अमूमन ऑफिस सिनेरियो में भी लोगों को बताता हूँ कि इंस्टेड ऑफ वर्किंग ऑन योर वीकनेस, जस्ट वर्क ऑन योर स्ट्रेंथ्स. लाइक आप अपनी वीकनेस पे 10% इन्वेस्ट करेंगे तो उसका आपको 10% प्रॉब्ली रिटर्न मिलेगा. बट अगर आप स्ट्रेंथ पे 10% रिटर्न इन्वेस्ट करेंगे तो उसका 100% रिटर्न मिलता है, जस्ट मैग्नीफाइज. एज लॉन्ग एज वीकनेस इज नॉट डील ब्रेकर. मतलब ऐसा भी नहीं कि आपको बिल्कुल कम्युनिकेट करना ही नहीं आ रहा हो, या अगर आप पीपल मैनेजर हैं तो आपको लोग मैनेज करना ही नहीं आते हो. आई डोंट मीन इफ इट्स अ डील ब्रेकर. इफ इट्स अ डील ब्रेकर यू हैव टू वर्क ऑन इट. बट छोटी छोटी चीजें कि यार तुम थोड़ा सा ज्यादा बोल लेते, या जरा ज्यादा ईमेल लिख लेते, या small stuff. If it's just small stuff that you need to fix, just ignore them. मैं अपनी वीकनेस, मुझे अगर इस तरह की कोई वीकनेस लोग बता भी रहे होते हैं ना कि यार तुमने ये सोच के बहुत कि यार तुम्हारे, अच्छा ये तुम इम्प्रूव कर लेते कि अगर सुबह 9 बजे आया जाए करो 9:30 की जगह. आई एम जस्ट मेकिंग अप. ऐसा नहीं मैं जल्दी आता हूँ, आई एम एन अर्ली राइजर, बट एंड आई गो लाइक this is the last thing I want to fix in myself. I rather focus on doing better presentations, which I know is my strength and I can speak well and I can present well.
versus ये कि मैं 9 बजे उठूं ऑफिस आऊं versus 9:30 ऑफिस आऊं. It's a bad example I'm giving, but hope I made sense when giving this example. So, anyways, yeah, this is kind of my some advice, but again went into a philosophical side of things, which I didn't intend to, but hopefully it was helpful. Yes, definitely. Because for me, the most important part of also the reason for doing this video and the reason for posting regularly on LinkedIn, and I'm sure आप भी वो चीज़ feel करते हैं, is to add value to people and their lives. Um, I'm sure when you see your LinkedIn messages, when I see my LinkedIn messages, the kind of help that people want makes me realize that we are the privileged ones. It's not that we are not making the effort, we don't deserve where we are, but it's just that sometimes where we start, other people are struggling to reach where we start 100%. off. That's the end goal for someone, which was actually a starting point for us. So वहाँ पे मैं थोड़ा सा and rightfully so speak philosophical side, and just that part of giving people hope, because that is something that in the past 6-7 months, especially in Pakistan, that is something that has really the situation has really impacted people badly. So thank you for the answer. That is it for the questions. It has been 2 hours. And I thank you again for taking out time. It's around 1, 2, or 3 p.m. in US, and I'm sure you've taken a small break from your busy schedule, and you must be getting a lot of emails. But I'm sure the content that you've given, the advice that you've given, this will go a long way in helping people. This has inspired me, and I'm sure this will inspire others as well. So thank you so much again, Behroz, for taking out time. Thank you, Umar. Thanks for reaching out. Thanks for giving me this opportunity. As I said, I'm a big fan. I learn a lot from you. And again, this is a way for me to learn as well, right? So ये जो अभी exercise हमने की है, where I'm talking, you're asking me questions. When you ask me a question, I also reflect on it, right? और मैं भी बहुत सी चीजें ऐसे सोचता हूँ कि यार, because बहुत सी बारी you're just living life because it is happening. But then you look back and you kind of connect the dots and say कि यार अच्छा ये pattern था. So this gives me an opportunity to reflect back, especially when I'm telling my story, to find those patterns and say, yeah, this is where I was lucky. This is where I really worked hard. This is a chance which I took, and all. And plus, I teach myself when I'm imparting knowledge. You would agree with me that the best way to learn is when you teach. So that's what I do. That's what my channels are for. So I have 3 primary channels. One is LinkedIn, where I kind of share things I read, I learn, and how I apply onto them. उसके बाद मेरा एक channel है it's in English on YouTube, where I talk about career success, and how to get better at career, how to change jobs, how to find jobs, and all. And then I have a channel with my wife. That one is in Urdu, where we talk about settling in Canada, how to move to Canada, and life abroad. So I think all that we've kind of touched is a lot of stuff that I already talk on those channels. But again, man, thank you for this opportunity, and best of luck for all the initiatives or all the things you're doing. You're just doing a great job. Just keep doing it. There will be moments you'll find yourself कि यार ये response अच्छा नहीं आ रहा, बुरा नहीं आ रहा, ये ऐसा नहीं आ रहा जैसे you expect करें. But just keep doing it, because there is always someone like me who's really looking for the stuff you are posting and contributing. Yeah, thank you for the kind words, Jared. Um, uh, I think you're being too kind, but thank you again. The idea is to help people, and I'm glad. अगर किसी एक की भी लाइफ चेंज हो जाए या किसी एक को भी चीज़ अच्छी लग जाए, दैट्स माय वे ऑफ नेटवर्किंग एंड माय वे ऑफ मेकिंग श्योर कि समवन हैज़ बीन इम्पैक्टेड, तो एक अच्छा फीलिंग होती है। वो जो लोग कहते हैं ना कि यार नींद अच्छी आएगी, तो बस वो जो रात को आप सोचते हो यार मैंने किया क्या है? सो सही है, लाइक 10 hours a day ऑफिस में I'm not saying I don't add value, and I'm sure you also feel the same, you add value, but I tell people the same thing. आपने जो YouTube channel वाली बात बोली, that was also something very impactful for me, at least, because I tell people the same thing कि यार there's I don't believe that किसी में भी एक skill नहीं है, या किसी में भी कोई content किसी के पास नहीं है, या किसी में कोई अच्छा नहीं है. Everyone is good at something. It's just that you need to identify. For example, I tell my mother, she doesn't want to open a YouTube channel, for example, on cooking.
but she knows a lot of stuff about cooking and the books that she has and the shows Yeah. that she follows. It's just that how your life has been. If there's no skill, at least just share your point of view or your thought process or how where you are coming from. The world is open to you. मेरा जिन लोगों के पास होप नहीं है और जो लोग सोच रहे हैं कि यार क्या करें आगे जाके किस तरह करें and we're depressed or we're stressed or who don't know what the future holds for them, just like Behrouz mentioned, this shall pass, and keep finding avenues. So on that note, Behrouz, thank you again. And people, if you have any questions, Behrouz mentioned the channels that he regularly posts on. Feel free to go there, subscribe, and comment and get advice from him and learn from him. For this video, if you have any comments, just feel free to write, and I'm sure we'll get back to you. Thank you so much. Cool. Thank you. Thank you, Omar.